So first, I'm assuming that all of us know basics of options. Yes, thumbs up दिखा दे. और Anand and Punesh. Okay, I'll just show you an option chain, how an option chain looks like, and what is option chain, I'll also explain. तो option chain दिख रही है ना, ये सेंसिबल खोला हुआ है मैंने. तो Nifty, you can get it for free, huh? The basic option chain, and you can get it on NSE website also. So this is Nifty's option chain. So what is option chain? So there are two ways. If you're buying a particular item underlying, you can buy in the spot. So say Nifty was trading 17,956. You could have bought Nifty at 17,956. But I am not comfortable buying Nifty at 7,956. I say I want to buy Nifty at say 17,000 rupees. Then I have to give premium of 480 rupees. So this is the trading price of Nifty. So this is the strike, different strike price, 13,500, 14,000, 14,500. This is IV volatility. We will talk about volatility later. This is the last traded price. Bid price, कितने पे buyer है, offer price, कितने पे seller है. How many people have, how many contracts are open, is OI open interest, and what is the change in open interest. So this is for put. Similarly, this is for call. So if you see 18,000, we can take 18,000 as the current Nifty price because and this is I'm talking about December 2023 Nifty. So Nifty you can trade every week, every month, or maybe this is we are talking about December 2023 Nifty. We are taking a these options premium are for December 2023. So for 18,000 Nifty 956, we if we round it off Nifty 18,000. The premium for put is 777 rupees and for call is 1392 rupees. Okay. So as per the option price today, yesterday closing, Nifty should close below 19,397 on the higher side, and on the lower side, it should close below 17,223 or something. So what is the best way to make money out of Nifty, these options. So first is options are future and options. The options would not be traded independent of future. Few people, when once you become have very good understanding, you can trade in options independently. So best is to deal in options along with cash market. So here we will talk about cash market plus options. So for the timing, for the sake of simplicity, let us understand that we want to only deal in Nifty. Because if you see Nifty's long-term chart, we have discussed this earlier also. If we see Nifty's long-term chart, Nifty is in one direction, which is up. So if you see monthly chart of Nifty, if you see yearly chart, if we say go to the yearly chart of Nifty, 12-month chart of Nifty, Nifty is going up. In long term, Nifty goes up. So that is why you can see the difference in premium at 18,000 December 2023. If you want to sell put option, you get only 777 rupees. Whereas if you sell call option, you get about 1400 rupees. So market always has this belief that at the end of the year, Nifty will close higher than closing lower. That is why there is a gap between same strike price premium. So if you come to the say lower time frame, you will see the put premium is higher and the call premium is lower. Okay, this is next week premium, and if you see this month's premium, call is slightly higher, more or less both are same. But if you go to the year-end premiums, the put premium are far lower than the call premium. So market always has a positive bias. Okay, so far clear. Okay, so say I want to
बाय निफ्टी, मुझे निफ्टी खरीदना है, मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू ईटीएफ एंड वी आर डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वीडियो. You can buy it through ETF or you can buy it through mutual funds, whatever makes you comfortable. You can buy Nifty, but I don't want to buy Nifty at 18,000. I want to say buy Nifty at 17,000. दिसंबर 2023 में निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज करेगा तो आई एम अ बायर, ऐसा मैं मान लेता हूँ. तो व्हाट कैन आई डू टुडे? आई सिंपली डू नथिंग, वेट फॉर 17,000 टू कम. What I can do is I can sell December 2023 put option. You collect 480 rupees. अभी 480 में इसको बेचना है, तो what you have to pay some premium, you have to give some margin. So this is Opstra. Opstra say we check December 2023, say 17,000 put option. What is Opstra we have discussed. और भी बहुत सारे tools हैं to check this position. So you need 1,23,000 rupees to sell 17,000 put option at 487. You earn 20%, 19% on your capital invested. What are the scenario at the end of the year? क्या क्या हो सकता है? Any guess? Anyone want to share what can happen to Nifty end of the year? It What are the can possibilities? it can be at 17,000, go below 17,000, or it can be above 17,000. Perfect. So if it goes, if it is at 17,000 and above 17,000 तो आपने पूरा प्रीमियम कलेक्ट किया, करेक्ट? तो आपने 18-20% अपने कैपिटल पे बनाया and you are chilled out. You have collected a premium of 480 rupees. So if Nifty falls below 17,000 by 480 points, you don't lose money. आपको कोई नुकसान नहीं है. तो 500 रुपए मान लेते हैं, तो 16,500 तक you don't lose money on your trade standalone. But remember why we took this trade. Our idea was not that we were speculating Nifty will not go 16,500 or 17,000 or 18,000. We took this trade with the idea of taking delivery on Nifty at 16,500. So we buy Nifty in the cash market at the end of the year. If it is closing 16 below 16,500. Otherwise 16,500 से ऊपर हम पैसा बना के जाएंगे. Clear to all of us? Any question on this? No questions on this? Perfect. Rajesh, I had a question. I mean, sorry, I joined a bit late. No problem. On the comments that you mentioned on this on this WhatsApp chat also. So just wanted to sense, while I understand that, okay, yes, we are getting a option premium, and of course for a longish duration I'll get a larger premium also. But however, I believe the margin requirement will also be higher for that. So if I take that into account, that ultimately I have to place extra bit of margin on exchange for doing a long tenor option. So on a return on that cash, how does it work out? How did that maths work out? Was something I just wanted you to touch upon when you are going to the details of that. So let us let's finish this discussion and then we come to that just after this. So this is clear, right? 16,500 below, we will take the delivery of Nifty. Okay. So now any question on this? Otherwise we move to Kamal's question. Rajesh, one question. This if it goes at 16,000, right? So whatever loss is there, we have to pay to the on the option, that will have to be here, and then we can buy. If Yeah. saying, So your costs of taking delivery of Nifty will always be 16,500. Whether it goes to 14,000 or it goes to 15,000. You have locked in your buying price. Okay, I got it. Okay. So by selling the option, you have given up that right of buying it at lower price. So whatever you lose on the option premium, you gain in the price of the Nifty. Okay, I got it. And what is the next step? So this wanted to know if we have to take the delivery of Nifty option, what is the instrument that we will buy at the end of in stocks ETF. and per lot? ETF. ETF, Nifty ETF. Which ETF? Because there are Nifty 10 ETF. who are running their ETFs. So the highest, whichever has the highest highest AUM, go and buy that. No, I mean, see, stocks I have to buy stocks, but ETF,
ETF I have to buy, but because ETF price, I mean, I don't know. This part I'm not sure what instrument I will buy at the end of the year. So let us discuss that. So let me just cover that first. So Nifty ETF, if you search in, oh sorry, let me share my screen. And Rajesh, a related question on this, Mhm. adding on to what Manish asked was, on a micro level, can I actually do a delivery of ETF to settle that, or is it more like a notional thing only that ultimately I'll be selling that ETF in the market and settling off my option on a net basis? Yeah. It doesn't happen automatically. In India, it doesn't happen automatically. US, it happens. India, you have to manually square off the transactions. So basically, on the delivery date, I'll either be booking the scenario which people were discussing that if market goes below 16,500, which means I'll be booking a loss on my final day of closure, or I buy it at a lower at a loss and then settle it against ETF buying effectively Yeah, so one is that you can buy the option and and book square off losses, the crystallize loss, that loss. Yeah. but and you buy lower the at lower price the ETF. The advantage here is that you book business loss in selling options, in buying options, and whenever you make money in the Nifty going up, you make a short-term capital gain. So there is a the arbitrage of taxation. So I will not get into that. That may be a discussion for a separate That session altogether. that's there's so many traders do that at the end of the quarter, at the end of the year. Like I also do that. I book losses in my because if I have say 50 lakh profit in my future, I'll simply take some trade knowing that I'll make losses, but I'll take delivery of the underlying. So I'll reduce my profit. So that's a separate discussion. We'll take some time later. So say if we have to see how to, the question was how we'll buy the, so there are multiple, if you search Nifty ETF, so there are multiple index exchange traded funds available. Okay. So there are so many exchange traded fund available. So Nifty 50, so they are exchange traded fund. You buy any of the exchange traded fund, you will get in the, so these are indexes, sorry, these are not funds. ETF fund. It's the ETF, you come in, exchange traded ETFs. So there are many ETFs, Mirai Asset Nifty ETF, Nippon Nifty ETF. So there are different types of funds for different exchanges. So you go for equity ETF, the Nifty 50 ETF. You pick up any ETF actually. So like say Mirai Asset Nifty 50 ETF, you can buy equivalent to one lot of future. So say Nifty is closing at 16,500, 16,500 into 50. 50 is the lot size. So say if you have to calculate 16,500. 16,500 into 50, 8 lakh 25,000. So you buy 8 lakh 25,000 equivalent of ETF. So ETF price is at 20 rupees. You divide 8 lakh 25,000 divided by 20 and buy it. So this is one way to close the trade. Is this clear? Manish, is it clear for you? Rajesh, Yeah, there is an issue in the yeah. ETF. Generally, the liquidity is not very good. So, if you go and purchase that kind of quantity, there may What be I personally फर्क की एक problem होगी मेरे ख्याल से नहीं. what I You personally, buy the, you are buying an option at 17,000. You also buy the equivalent amount of Nifty on that very day or whatever is the price. Now, if it goes, if you have sold the call option at 17,000 and Nifty goes up, so you are losing on your option but gaining on the ETF which you have bought simultaneously. I mean, so I many trades are possible. I'll come to multiple trades are possible here. So this is the simplest. I'm starting with the most easiest trade. So first, closing on this question of Manoj on the ETF may not have that liquidity. So generally for one lot, 8, 10 lakh, there is no problem. If you want to buy 1 or 2 crores, there might be issue. But still, if you feel that there is an issue, you don't buy ETF. You go to a mutual fund offering the Nifty, Nifty tracking fund. So there you can buy any quantity. You just simply Yeah. go and buy from the mutual fund. So this issue will be taken care of. So this is one way of closing this trade. Easiest way of closing this trade. For starters, I will say that
If you wish to buy Nifty sometime in future, then only take this trade. ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि निफ्टी में 16,000 में बायर हूँ, 16,000 आएगा तो मैं खरीदना चाहता हूँ, instead of just waiting and not making anything out of it. See what can happen if you want to buy Nifty at 16,000, you wait. If it doesn't come, you don't make any money. But if it comes, so here I am giving you an option to make money. I am giving you a strategy to make money. If Nifty is not closing at 16,000, at least you make something on your capital. So this is one way of closing this trade. There are many more ways of closing this trade, which we will discuss during the session. Let's first take Kamal's question that in terms we'll have higher margin requirement because that's a premise of getting into this trade because that changes everything. So Nifty December 2000. So let's assume for the time being Nifty is 18,000. So if I sell 18,000 put option and if I sell 18,000 call option. Let me remove this trade. Yeah. So I need a capital of 2,40,000 at the time of entering the trade. जब आप ट्रेड इंटर कर रहे हैं आपको 2,40,000 का कैपिटल चाहिए. The moment you have entered the trade, you will get a credit of 1 lakh rupees. Your net capital requirement become 1,32,000 rupees on this trade. 240 when you enter the trade, the moment you enter the trade, you get a credit of 1,08,000. So you Sorry, Rajesh, what does it mean? थोड़ा explain करोगे? हाँ तो इसलिए तो पता है मार्जिन क्या रिक्वायरमेंट है. 2,40,000 का रिक्वायरमेंट है, ये क्लियर है, राइट? Yeah. ठीक है. जैसे आपने ट्रेड लिया ये ना, तो आपने 775 में 18,000 का पुट बेचा, 1400 में 18,000 का कॉल बेचा, तो ये दोनों प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इंस्टेंटली. जैसे ही आपने बेचा आपके अकाउंट में 1,08,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे. Okay, okay. So since 1,08,000 is credited to your account. Okay, so this is 775 and 1,400 ka net sum and that multiplied by number of units of that, the lot size essentially. Yeah. So this will get credited to your account, broker account. Either you can withdraw this money or you can simply. And that's the cash available with me. हाँ तो 1,30,000 मार्जिन पे आपको 1,08,000 रुपये बना रहे हो आप. So on 2,40,000 which is 45% return, but if you make it 1,38,000, so आप इसको कितना हो जाएगा? 1,08,000 divided by 1,32,000, which is about 80% return on capital. If Nifty closes at 18,000 at December 2023, and obviously it will not close at 18,000. Cannot withdraw this 1 lakh rupees. You can withdraw. Achha, This is can cash available. Yeah. So this is a cash availability. So effectively आप देखो कि अगर आपके पास मार्जिन पड़ी है ऑलरेडी, तो आपको क्या है, आपने तो एग्जिस्टिंग मार्जिन से, जैसे मेरा कभी 30-40% से ऊपर मार्जिन यूटिलाइजेशन जाता नहीं है. मैंने 30-40% एवरेज रहता है, पीक पे 60-70 जाता है इफ द मार्केट मूव्स अगेंस्ट मी सिग्निफिकेंटली. मैं तो इसको बेच के अपनी मार्जिन से बेच के और 1 लाख रुपए घर ले जा सकता हूँ मैंने. बट आई नेवर सजेस्ट दिस टू एनीवन बिकॉज मार्केट का पैसा है, तो ले जाओगे तो दोबारा लाना भी पड़ेगा. So this is on margin. Is it okay, Kamal, now at margin requirement? Rajesh, can you take a case? This is because the amount was very high because we were doing a in the money option. If you're At doing the money. at the money, sorry, we are doing a deep out of the money जो आपने example दिया था WhatsApp group में, because there the premium will be much smaller. No, Our so margin may not be so. So let's make it say 17,000 or what strike we should take. आप बताओ कमल. जो आपने WhatsApp group में क्या लिया था, we'll take that on. मैंने 18,000 ही लिया था, मैंने 18,000 ही लिया था. 18,000 आपने मार्केट लिया था और उसमें ऊपर आपने I think 16,500 और वो तो मैंने ब्रेक इवन कैलकुलेट किया था. ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ. तो आई कैलकुलेटेड द ब्रेक इवन. सो इस ट्रेड में आपका ब्रेक इवन है 15,823, 20,177. Till the market is in this range, you will not lose money. So say, this is net sum of both. So actually, what happens? Market at the end of the year, we close on one side. It cannot close on both sides. Correct. Right? So say if it is closing below 18,000, what will happen? You have collected 775 plus 1,400, which is roughly 2,200 for the sake of simplicity. 18,000 minus 2,200 is how much? 15,800. 800. वही 15,823 आ गया. ये आपका ब्रेक इवन हो गया नीचे. Similarly, 2,200 ऊपर. So 20,200 becomes your break even ऊपर. Yeah.
है ना। तो आपका ये ब्रेक इवन की बात कर रहा था मैं कि आप 16,500 में कभी ओके भी ओके 20%। नहीं नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया था, हम्म। आपने से दिया था कि फॉर इंस्टेंस आई हैव वन लॉट ऑफ निफ्टी, ओके टू सेल इट एट 20,000 एंड बाय एडिशनल क्वांटिटी एट 16,000. हाँ तो This is वही तो था assuming current price is at 18,000. So which means हाँ तो मैंने effectively you are क्लोज doing कर दिया। a deep out of the money 20,000 और 16,000 पे. तो उसमें हाँ वही obviously कर दिया premium ना। is much smaller. No. I sold 18,000. I rounded off 15,800 to 16,000, 20,200 to Okay, 20,000 break even levels. okay, okay. So I meant that if I want to buy below 16,000, I'll sell this premium, this combination. So say if you are buyer at 16,000 Nifty, there are two ways. One is that 400 रुपये में बेचो, जो मैंने बताया पहले. दूसरा है कि आप 18,000 में दोनों बेचो. So you collect much more premium. Your chances of making more money is much higher compared to just 400 rupees in the previous trade. Am I clear so far? But what will happen during the year? Assuming market goes one way हाँ. drastically, तब क्या होगा? Yes. So मैं आपको दिखाता हूँ जब मार्केट में मूवमेंट होती है ना तब the Nifty which is closest to the closest for expiry moves fastest. The options premium closest to expiry. Anything which is closer to sun burns first. So I'll just show you what happens if the market moves. You Uh, given a very nice analogy. yeah. So if the market moves, so say yesterday you see this strike price, Nifty put side is falling 50%, 40%, 20%. ठीक है, मार्केट मूवमेंट सेम है 0.6% का. 19 तारीख की स्ट्राइक प्राइस में आप देखो कितना डिके है, कितना मूवमेंट है और से बढ़ रहा है. बढ़ने की तरफ देख लेते हैं. तो इसमें देखो आप ये 17 किसी भी साइड में आप देख लो, ये देयर इज अ मूवमेंट राइट. यू गो टू 25 जनवरी, जिस तरफ स्ट्राइक आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिंस मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल के ऑप्शंस आप प्रीमियम देखो यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं और ये पुट के प्रीमियम थोड़े कम डीके हो रहे हैं. वहां पे 50-60% था या 40-50% की रेंज है. आप ये मार्च के ऑप्शन में आ जाओ, अब मूवमेंट देखो 5%, 10%, 15 ये आप ये ऑड लॉट पे मत जाओ, इसमें ज्यादा ट्रेड नहीं होते. बट आप जो 17,200 Market पर figure. देखो मूवमेंट इज लोअर ऑन बोथ साइड. ऊपर भी नीचे भी है 5%, 6% मूवमेंट है. अब दिसंबर में आ जाओ, द मूवमेंट इज 3%, 4%, 5%. Okay. So if market is moving near to strike, near to expiry has a higher volatility. As you move away, 5% market movement will move the premium by 10 to 20 times. I mean, 200,000%, 100,000%. But as you move closer away from the away of the expiry series, the volatility start reducing. That is why these trades require much lower adjustments. Okay. Clear so far? Any question? This is very important. Huh? Now, that is why you have to take much less trade. And as you take much less trade, the brokers make much less money. You have much less slippages. तो सपोज करो आपने 100 रुपए में खरीद के एक सीरीज से दूसरे सीरीज में गए तो आपको 1 रुपया 2 रुपया तो स्लिपेज ही आ जाता है. खरीदने बेचने के प्राइस में डिफरेंस ही आया था बिडास में. एंड द इन्फ्लुएंसर्स गेट मच लेस ट्रैक्शन ऑन देयर वीडियोस. आप उसमें रोज जाके उसके वीडियो को नहीं देखोगे आप. तो इट डजंट वर्क फॉर एनीवन इन द industry. Selling long-term options or buying long-term options doesn't work for anyone in the industry. तो ये मैंने आपको एक सेलिंग का एग्जांपल दिया. दूसरा है कि सपोज करो आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है. यू डोंट वांट टू लूज मनी ऑन दैट पोर्टफोलियो. कम कमा लेंगे, पैसा खोना नहीं चाहते. राइट. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव सम इक्विटी एक्सपोजर. व्हाट यू कैन डू, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड इन योर पोर्टफोलियो. आपको इंटरेस्टिंग ट्रेड बताता हूँ. हम इसी ट्रेड को रिवर्स कर देते हैं. सी कहीं भी ज्यादा टेक्निकल होना हो तो मुझे बता देना. हाँ, आई ट्राई टू कीप एज सिंपल एज पॉसिबल एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. द सेशन माइट बी वेरी बोरिंग बट या मे बी यूजफुल. हम अभी एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं. हम बोलते हैं हम ऑप्शन बेचेंगे नहीं, हम ऑप्शन खरीदेंगे. दिसंबर 2023 17,000 से नीचे बाजार जाएगा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं खोना. आई मॉडिफाइड दिस ट्रेड.
आई एग्जिट दिस ट्रेड। लाइफ में कौन पंगे लेगा? मैं ऑप्शन खरीद के बैठ गया 17,000 रुपए का, मैंने 25,000 रुपए दे दिए। मैंने 25,000 रुपए दे दिए बाजार को, ठीक है। मनोज को मैं म्यूट कर दूं या? तो 25,000 रुपए मैंने दे दिए। मैंने 10 लाख का, मेरा कितने लाख के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट माय पोर्टफोलियो विल मूव ब्रॉडली इन लाइन विद द निफ्टी। तो निफ्टी 10% गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी या तो 20% गिरेगा या 15% गिरेगा, मेरा पोर्टफोलियो वहां का वहां नहीं खड़ा रहेगा। ऐसा मान लेते हैं कि एक अजम्पशन है कि मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी के साथ मूव कर रहा है, तो मैंने 10 लाख 8.5 लाख के पोर्टफोलियो पे 25,000 रुपए में हेज कर लिया। तो 25,000 रुपए तो घर से लग गए ना। एंड द ऑप्शन डेटा शोज दैट 1,400 रुपए का प्रीमियम है कॉल पे, और पुट पे 700 रुपए का प्रीमियम है। क्लियरली मार्केट इज हैविंग अ बायस टुवर्ड्स ऊपर। मार्केट का बोलना है कि मैं ऊपर जाऊंगा, और जो ऑप्शन बेच रहे हैं आप ये मान लो, मार्केट का सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? कौन है जो ऑप्शन बेच रहा है? सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है मार्केट का। और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन बेच रहा है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, माने वो मार्केट में 20 साल 25 साल से है। तो लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में प्राइसिंग मिसमैच नहीं आते। शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, वो भी बॉट खा जाते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन में प्राइसिंग मिसमैच नहीं आते। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन आपको आज 2,000 रुपए दे रहा है, 2100 रुपए दे रहा है फॉर दी 18,000 कॉल इनपुट, market is likely to stay between 15,800 and 20,200 during this year. आप आज के दिन में इंडिया विक्स भी देखेंगे 15% है। इफ यू कैलकुलेट 15% ऑन 18,000 विल बी हाउ मच? 1,800 और 900, 1,800 और 900 कितने हो गए? 2700. 2700। So which is 20,700. So India VIX is also giving this indication at today's point of time. The market, this is the market range for this year. So if you take this view and make any position, you are very unlikely to lose money in the market. So let's come back to our trade. कि मैंने तो 24,000 रुपए दे दिए to hedge 17,000 at 17,000 my portfolio. One way is just keep quiet and pay this hedge. पर मैं बोलता हूँ भाई मुझे 24,000 रुपए नहीं देना बाजार को, क्यों दूंगा मैं हेजिंग पे? हाउ टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम द मार्केट? सो वी आर बैक टू, सो हम देखेंगे कि 400 रुपए मुझे कहाँ मिल रहे हैं कॉल में। मैंने पुट बाई किया है ना, बाजार नीचे न जाए, तो मुझे 400 रुपए मिल रहे हैं दो 20,000 के 20,000 के कॉल पे। आई विल गो एंड सेल 20,000 कॉल ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपके ना पैसे आए ना लगे, आपने अपने आप को इस रेंज में हेज कर लिया, विच इज दिस टू दिस रेंज, यू डोंट लूज मनी। तो आपने अपने गेन को 20,000 पे के इंडेक्स पे कैप किया, और लॉस को 17,000 के इंडेक्स पे कैप किया। दिस इज वन वे ऑफ हेजिंग योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिस्कस, इफ आई वांट टू बाय निफ्टी, व्हाट आई कैन डू with the help of options. Now we have discussed that I have a portfolio for which I want to protect downside. So for protecting downside, I can say pay premium from my pocket. बट आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है। तो आप 10 साल प्रीमियम देंगे तो आपको अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैप द अपसाइड आल्सो इन दैट सिचुएशन। आई विल डू दैट वे, बट देयर कैन बी पीपल हैविंग डिफरेंट व्यूज। Other is that I already have a portfolio, but I don't want to hedge my my sort of my downside. Why I don't want to hedge my downside? I will look at this chart of Nifty. What does this indicate? Nifty goes up. You see yearly close, negative close for Nifty. It happened in 2015. Since 2015, Nifty has never given a negative close. Nifty since 2008
has not closed 2 negative years. So why will I hedge downside? एक साल नीचे आएगा तो दूसरे साल बढ़ जाएगा बाजार, मैं नीचे क्यों hedge के पैसे खराब करूं? पर मुझे क्या देखना है कि बाजार ऊपर एक साल में 15 से 20% ऊपर क्लोज नहीं करता, है ना? तो आई एम रेडी टू गिव द अपसाइड ऑफ माय portfolio beyond 15-20%. I can go and sell 20,000 call or 21,000 call. और ये प्रीमियम लास्ट 15-20 डेज में बहुत डिके हो गए. अब ये जो आपको 2200 रुपए दिख रहा है ना, 2800 रुपए था दिसंबर में मैंने बेचा है, 2800 रुपए था. तो जनरली क्या होता है कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो दिसंबर फर्स्ट वीक से थर्ड वीक में अपनी पोजीशंस रोल ओवर कर लेते हैं. ऐसा नहीं मैं पहली बार बेच रहा हूँ, मैं तो हर साल बेच रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. If you don't do it consistently, it's very difficult to make money. Year after year, because statistics come into play. Like if 2008 Nifty has not given a negative close for 2 consecutive years, so there might be 2 years where Nifty closes in red. But there will be next 10 years, Nifty is not closing in red. So if I've lost money in 2 years, I can't be out of the trade. I have to keep trading every year. So far clear? So now let's make it interesting, more interesting. मैंने मार्केट की रेंज देखी, 16,000 से 20,000 की एक रेंज है, 400 300 400 पॉइंट अच्छी है, तो मैंने 16,000 का पुट भेज दिया. आई हैव नो आइडिया ऑफ नो इंटरेस्ट ऑफ टेकिंग डिलीवरी एट 16,000. व्हाट शुड आई डू नाउ? और 16,000 के नीचे क्लोज हो गया मार्केट. हाउ कैन आई गेट माई मनी बैक इन दिस ट्रेड? एनी गेस? I'll keep on selling it every year. So suppose करो 15,800 में बंद हो गया. I have seen from 2008 market has not given 2 consecutive negative years. And since the beginning of market has given only once 2 consecutive negative years. And that also very, very small candles. You see, only once since 1991 Nifty has given 2 negative. And these are very, very small candles. Very small candles. तो मुझे पता है कि बाजार 2 साल since 1991 for more than 33 years, 32 years has not given 2 negative years. What can I do? Say Nifty closed 15,000, say my head ends at 16,000, Nifty closed at say 15,500. 500 रुपए का नुकसान हुआ मुझे. मैंने नेक्स्ट ईयर 800 से 900 रुपए का जहां प्रीमियम मिल रहा है बेच दिया वापस, which will be some 13,500, 14,000 के आसपास. This is one way. This is one second possibility. How can we make money? So say I will never sell one side. If I don't want to take delivery and if I'm taking a view on the market, I will sell 16,000 put, 20,000 call. तो 400-500 रुपए जो मुझे कॉल में मिले, नीचे की ब्रेक इवन मेरी इंप्रूव हो जाएगी. और improve होगी. Next day I have sold say 800 put, or I have a choice of selling for split that 800. 500 में 300 रुपया प्रॉफिट में तो जोड़ूंगा मैं. आप 400 रुपए कॉल को दे दो, 400 रुपए पुट को दे दो, दोनों को बेच दो. जहां 400 कॉल मिल रहे, जहां 500 400 पुट मिल रहे. You do for your life. You will continue to generate 25 to 30% on your capital. This is one way. This is one possibility. Second possibility is like 2,800 option premium has reduced to 2,200 now in 15 days. So decay will be fastest now. Decay will become fast. The moment I get 50% of my premium, I exit from the market, from the trade. I do that. Not one side, both sides, premium combined. If I get 50% of my premium, I exit. So I don't allow all the probabilities to play out in the market. Or the market has moved out 1,000 points. Sorry, just interrupting on this point which you mentioned about moving out when 50%. So we started with that roughly 1,800 was a 2,100 was a cumulative amount.
2100 something, 2200. So you are saying essentially when that premium on both sides comes down from 2200 to say 1100, that is the time when you are saying you can exit and get that profit. That's what you are saying? Yeah, yeah. Other, I did what I did. I squared off my 20% position in 15 days only. And that is Because because it happened faster. I'm saying as a rule, you are saying effectively that it happens generally. हाँ, so 50% में you can exit. So if I get better deployment for my fund, I'll exit. So अगर जैसे मेरा 40, जब मैंने स्टार्ट किया था 53-54% का ROE था, अभी 45% का ROE बचा है ना? अगर ये ROE 30-35 पे आ जाएगा तो मेरे को दूसरी स्ट्रेटेजी है जो मुझे 40-45 देने वाली है. I'll exit from this trade. और से निफ्टी has moved 1000 point both side, either side. और आप अभी भी प्रॉफिट में हो तो निकल जाएंगे. अदर थिंग इज निफ्टी स्टार्ट मूविंग से आपने 18,000 में ट्रेड लिया, निफ्टी मूव टू 17,000. See what happens in long term, Nifty may remain volatile in the long term, but short term we have seen the range of Nifty 15 to 20%. मैं चैलेंज साइड में प्रीमियम बढ़ गया because Nifty is now 17,000, so I'll sell one more put challenge side में. My assumption is Nifty is not going to close say 30% down from here. It has never closed. So I'm assuming there is no new history to be created out of it. है ना? आप दोनों चीज भी बेच सकते हो, कॉल भी बेच सकते हो, पुट भी बोल सकते हो. So there are many ways to adjust this position. My suggestion is this should be only 5-10% of the or 20% of the portfolio till you have not seen 2-3 years. There is one way saying that you might incur a loss. See, and always if there is unlimited loss in option selling, it can materialize. If you are not doing it प्रोफेशनली, माने आप बिल्कुल ऐसा रिटर्न रूल्स नहीं है आपके, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं. पर इस ट्रेड में जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दो यू आर नॉट टेकन दिस ट्रेड, बट एक बेसिक सेंस आपको लग रहा है कि इसमें पैसे खोने के चांसेस, हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे तो इस ट्रेड में पैसे नहीं खोएंगे हम. और समय भी नहीं देना, आप सप्ताह में एक बार भी आप अपने ट्रेड को देख रहे हैं, तब भी आपको कोई चैलेंज नहीं है. दिस इज my thoughts so far, and plus I'm not a certified advisor, so we are just doing a general discussion. ये बहुत बड़ा, and I can go completely wrong, है ना? You might lose actually unlimited money. Instead of it is a theoretical possibility, it becomes the practical situation, है ना? So Rajesh, does it make sense like for the example which you took that okay you took a long tenure position and maybe say in 2 months suppose it that value comes down to 50% and you kind of wanted to crystallize that loss and then I do again for 1 year hence? So quarterly also. So I do take trades quarterly also. So market में ना, at any point of time there is huge possibility. So what happens? So say if Nifty has given a 10% fall, ऐसा मान लेते हैं, तो मेरे लिए तो मार्केट इज अ कंप्लीट बाइंग अपॉर्चुनिटी ना. तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, अगर मुझे हल्का लॉस भी है तो मैं निकल जाऊंगा. बस आई डिप्लॉय माय कैपिटल. फाइनाइट कैपिटल इज चेंजिंग इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज. तो जहां आरओई मेरा बेटर है लोअर रिस्क पे, मैं तो अपने कैपिटल को वहां ले जाऊंगा. Like I trade very actively in the sense I have a decent position in currencies. तो जैसे रुपी अभी अप्रिशिएट हो रहा है लास्ट 4-5 दिनों से, so premiums have increased on the put side. So this is a mouth watering opportunity. तो मैं अपनी निफ्टी की पोजीशन हल्की करके I will move my money to the USD INR. One of the safest trade possible. तो जैसा है ना, actually why I have started this group and why I discuss this opportunities is that money making is very simple. But we look for excitement. Money making is boring. We look for excitement in making money. तो जैसे आप ये ट्रेड कर लोगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपको. आपका डेली का 3 रुपए 5 रुपए से प्रीमियम दिखे, और आप डेली देखेंगे तो मूवमेंट भी नहीं आएगी. आपको 15 दिन में पता चलेगा कि 50 रुपए का फायदा हो गया मुझे, है ना? और रिस्क कितना कम है. मैंने आपको दिखाया कि इमीडिएट क्लोज टू प्राइस द प्रीमियम्स आर मूविंग 50%, दे कैन मूव 10x 20x. आपका ईयर एंड का मूवमेंट ही नहीं है, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम द सन, मानी यू आर अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द मार्केट. एंड मार्केट लॉन्ग टर्म में वॉलिटिलिटी खत्म हो जाती है. ऑप्शन में एक चीज जरूर मान के रखना चाहिए, निफ्टी ऑप्शंस में कभी भी मिस प्राइसिंग नहीं है. कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि मार्केट का, आपका अगर ऑप्शन के प्राइस से व्यू डिफरेंट आ रहा है ना मार्केट का, आपका व्यू गलत है, या मान लिया. गलत हो सकता है, नहीं गलत है. अगर आपका ऑप्शन के उस दिन के ऑप्शन प्राइस से आपका मार्केट व्यू डिफरेंट बन रहा है तो आपका व्यू गलत है.
ऑप्शन प्राइस इज बिकॉज बॉट चल रहे होते हैं, मशीन चल रही होती है, तो दे विल परफेक्ट द प्राइस इन 2-3 मिनट्स टाइम, तो 2-3 मिनट का भी गैप नहीं देते निफ्टी में कि वो प्राइस मिसमैच हो जाए विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट एक्सपेक्टेशन चेंज, प्राइस चेंज, but whatever is the market expectation today, the price is reflecting that expectation. And there are various statistical way to validate those expectations. It's not that it's a personal view, it's a statistical way to validate those. So this is all for me. Any questions? There are many other ways to hedge this position, many ways. Yeah. Yeah, Manoj. Yeah. Bhaiya, you were saying that like placing, like if you are selling options and in your like account you already have shares, so can you place those shares or you have to need to have cash? Yeah. So I'll show you my one of my account. को भी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको. कौन सा खुला है ये? One second, it's taking time. तो दिस इज वन ऑफ माय अकाउंट्स, तो जहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बेचे हुए हैं, ऐसे 1800 बेचे हुए हैं यहाँ पे. तो से आई गो टू फंड, तो ये मार्जिन है ना 27 लाख का, इसको होल्डिंग में जाएंगे ना. तो यहाँ पे जैसे मैंने टीसीएस को प्लेज नहीं किया हुआ है, अदरवाइज यू कैन टीसीएस की इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी रखी हुई है, तो बहुत फॉर रिटेल कोटा. तो आईसीआईसी प्रू का ग्रेड फंड मैंने यहाँ पे है उसको प्लेज किया हुआ है, जैसे 50 लाख रुपए का. तो आपको जो भी शेयर होल्डिंग यहाँ लिस्ट में आ जाएगी, उसको प्लेज करने जाएंगे ना, जैसे इसको से प्लेज, इसको देखते हैं टीसीएस में, देखते हैं प्लेज, प्लेज फॉर मार्जिन. तो आपको ये हेयर कट दिखाएगा, 12.5% का हेयर कट है. टीसीएस प्राइस इज 3374, 12.5% हेयर कट, 2900 रुपए के हिसाब से आपको मार्जिन क्रेडिट कर देगा. और टीसीएस की प्राइस जैसे मूव करेगी आपकी मार्जिन मूव करेगी. अभी आपसे इसको प्लेस करने जाएंगे, प्लेस फॉर मार्जिन, इसमें 10% का हेयर कट है, बिकॉज इट्स मोर लिक्विड, गिल्ट फंड इज मोर लिक्विड. तो दो तरह की मार्जिन होती है, वन इज कोलैटरल लिक्विड फंड, कोलैटरल इक्विटी. So maximum 50% of margin can come from equity. Liquid fund can take care of equity margin, but equity fund cannot take care of liquid margin. So 50% तक आप शेयर प्लेज करके ट्रेड कर सकते हैं. बैलेंस 50% यू हैव टू ऑफर. दिस इज अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी. गिल्ड, मैं गिल्ड फंड ऑफर करता हूँ बिकॉज सबसे हाईएस्ट ब्याज गिल्ड फंड में आता है. So guild fund में ऑफर करके ट्रेड करता हूँ, because guild anyway gives 7.5, about 6.5 to 7% return every year, which gets topped up with the market return. तो इसीलिए मैं अपने मार्जिन 30-40% ही यूज करता हूँ, because anyway guild is giving me my return. My idea is to just create some extra return so that average return is about 15% on my entire portfolio, because my option uh, that would gives me about 30 to 40% annual return. My target is 18%, but it generates 30-40%. So it averages out my entire, say, if I have capital of 3 crore, if I'm trading with 1 crore, my entire capital returns become 15-18%. You can ask a question, but if you are making 30-40% and you are so confident that you will not lose money, why don't you trade with entire 3 crore? Market में accident can happen. Suppose को मेरे पास कैपिटल है, उस दिन जीरोधा चलना ही बंद हो गया, मार्केट में मूवमेंट है, जीरोधा नहीं चल रहा है, या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मेरा दिमाग उस दिन, मेरा तकदीर खराब है, मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन, मैक्सिमम आई लूज दैट margin which I've given, maximum. So that's like a theoretical situation. So I always advise people to trade in options with the money which they can lose, and their life will not go to standstill. तो जब समय खराब है ना, आदमी का दिमाग कैसे खराब हो जाता है पता नहीं चलता. सारी नॉलेज उन्हें कहीं डस्टबिन में चली जाती है. और स्पेशली मार्केट इज, यू कैन ट्रेड इन अ नैनो सेकंड. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी कंजर्वेटिव, मुझे तो ऐसा लगता है. Anything else?